Hello, this is Manur Tai from NAVAFIZ YouTube Channel, and today we are going to talk about the opportunities that finance professionals should consider while coming to UAE. So we have our guest today, Mr. Faisal, who has like 7 years of experience uh, in this field, and he is in UAE since last 1.5 years, and he has also done his MBA in ICMAP, and he is also ICMAP partly qualified. So, welcome, Mr. Faisal. Thank you so much for joining this session today, and thank you so much for accepting the invitation. Thank you so much, Manurtai. Thank you so much. And I really thanks to NAVAFIZ Management Consultancy also who give us the opportunity to serve the pupil of job seeker. Or that's all. Thank you so much. Okay, so now we are going to move forward to our questions that I'm going to ask from Mr. Faisal, and we'll take his expert opinion regarding this field and how we are going to help the experts coming to UAE regarding the job purpose. So, are you ready, Faisal, for the questions? Yeah, Alhamdulillah, you can start. Okay, so my very first question is, what are the key accounting and finance role in demand in the UAE job market currently? If you consider UAE job market regarding accounts and finance role, so there is four roles that you can consider. The first role you can consider the financial analyst. The second role you can consider an accountant. Third one is a tax expert, and fourth one you can say a management, portfolio managers and portfolio management type. So these are the four key roles that is in a trending in UAE in these days. Okay. So, what do you think? Like, what are the essential qualification or certification they need to come to UAE for job? Like if you talk about accounts and finance professional, like if you are going for the financial analyst, so definitely there is two. I will divide the qualification in two part. First part is, are you a degree holder? Which degree you have, BCom or master, whatever you have. In accordance with that, what you have in certification, like you are CPA, you are CA, or are you ICMA. So it matters a lot. Like if you are CA, and if there is also a candidate who contain a CFA qualification, so most probably company will prefer the CFA first one for the financial analyst. But for the accountant, as far as degree concerned, BCom is enough. If you have a CA inter or CA qualified or ICMA or CPA, just like this. But if you are like only if you does not have a professional qualification, then you should have masters in accounting and finance, like MBA in finance, to overcome these certifications in your interview as far as your experience concerned. So it matters a lot. It's linked with degree to certification. If you have a higher level of certification, then you could have some degree like BCom. But if you does not have a professional qualification, then you should have a master's degree along with some certification regards the job search in regarding related to UAE market. So that's it. Okay. So, are there any like local accounting standard or regulatory consideration that the professionals must be familiar with? In this, you can say there's a regulatory authority in UAE is MOAT, uh, Ministry of What's the spelling of this job CAD, or what's the spelling? in MOAT you can say Ministry of wait a second, because mostly we say a MOAT. So in MOAT we can say Ministry of Industrial and Advanced in not Okay. Ministry of Industrial and Advanced Ministry of Industrial Advance and Technology. Yes, you can say this because we mostly don't use this authority name, but I heard this name. This is the regulatory authority of MOAT. So that's why I'm considering this, and why I'm considering this, but it's because it's related with accounts and finance professionals. Like Okay. ICV is in country value. You cannot see this ICV certificate in Pakistan.
Pakistan, there is a maximum level of financial audited financial statement. That's it. But when you are going for the like, आप जब कभी भी जाते हो किसी टेंडर के लिए in UAE, so UAE asks for the ICB certificate. So when Okay. you go for the ICB certificate, so for the ICB certificate, authority demands you a audited financial statement. So for audited financial statement, you need a bookkeeping. सो Okay. व्हाट वी डू मोस्टली इन पाकिस्तान, हम पाकिस्तान में क्या करते हैं, हमारे पास प्रॉपर बुक कीपिंग रिकॉर्ड नहीं होता, हम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कर लेते हैं इजीली, और फिर हम टेंडरिंग में वो ऑडिटेड फाइनेंशियल की बेस पे जो भी प्रोसीजर होता है उसे फॉलो करके वी कैन गेट अ टेंडर. बट हियर यू नीड अ आईसीबी सर्टिफिकेट. आईसीबी सर्टिफिकेट की मैं थोड़ी सी आपको एक आइडिया दे सकूं. वो कंपनी जिसका कितना परसेंट रोल है यूएई की ग्रोथ के ऊपर, यूएई की इकोनॉमी के अंदर कितना परसेंट वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है, वो पता चलता है आपको आईसीबी सर्टिफिकेशंस के थ्रू. So that's why I have used this name. Okay. So moving towards the next question, we have like what are the major industries in the UAE that offer excellent career opportunities for finance professional? First of all, I would like to say the name of Big Four firm. Like Big Four firm are always open. स्पेशली के वो लोग जो कि पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं, लाइक इन केपीएमजी या पीडब्ल्यूसी और ईवाई के अंदर भी हैं, तो वो अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं यहाँ पर यूएई में भी उन लोगों के लिए, उन फाइनेंस प्रोफेशन के लिए, दोज हु आर वर्किंग इन देयर होम कंट्री. तो यहाँ ऑलवेज ओपन है. केपीएमजी भी आप जा सकते हो, दोज हु हैव द बैकग्राउंड ऑफ सम एक्सपीरियंस, तो वो जा सकते हैं. ये दूसरा, अगर आप यहाँ पे कंपनीज के उस पे आ जाए तो अल्फुतैम एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं. अब वहाँ वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं. दूसरा फिर आपका एमिरेट्स ग्रुप है जो कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं यहाँ पे जॉब सर्च के हवाले से. फिर एक और है लूटा ग्रुप ऑफ कंपनी है, जस्ट लाइक पीएनजी है. सो ये सारी कंपनीज हैं जो फाइनेंस प्रोफेशनल को बहुत सारा, मतलब कि बहुत ग्रोथ दे रही हैं, और दे आर ऑलवेज ओपन फॉर देम. So most of the people think that how we can search the job. If you go to Al Futtaim group, you can make a ID there and you can find a lot of jobs there. So that's how you can overcome your stress regarding the job search. So ऐसे ही आप एमिरेट्स ग्रुप में भी जाएं, वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी. यही नहीं कि अगर आपके पास बिग फोर का एक्सपीरियंस नहीं है एंड यू आर नॉट रिलेटेड टू द बिग फोर, आप ईवाई से नहीं है, आप केपीएमजी से नहीं है, आप बहुत सारी कंपनी में मूव ऑन हो सकते हैं. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है. अगर कोई नाम मुझसे रह भी गया, इफ यू गो टू द गूगल एंड यू कैन सर्च द यूएई जॉब इंडस्ट्रीज, मेजर इंडस्ट्री, यू कैन फाइंड आउट ऑल दिस नेम्स देयर. सो ये सारी इंडस्ट्री है जो मेजर रोल प्ले कर रही हैं यहाँ पे. Okay. So many people have this question in their mind that how much they are going to get pay when they are going to come over there. Like seriously, they have high expectations in their mind, right? So, like, what are the typical salary ranges and benefit packages for accounting and finance professional in the UAE? Let me tell you the truth. Like here in UAE, there's a guy who is searching a job in the field of account and finance. उसमें बीकॉम की कैटेगरी भी आ रही है, लाइक फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान, वट एवर द जियोग्राफिकल कंडीशन इन कंट्री इज. लाइक अगर वो इंडियन भी है तो वो बीकॉम वाला भी है जो अकाउंट्स की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, और वो सीए वाला भी है जो अकाउंट्स की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है. जस्ट लाइक Exactly. सेम फॉर द फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑल्सो, उसमें सीए वाला भी है, उसमें एमबीए वाला भी है, उसमें सीएफए वाला भी है, और उसमें सीपीए वाला भी अप्लाई कर रहा है. अच्छा, सैलरी बार्गेनिंग में ये होता है कि इफ यू आर ओनली अ बीकॉम, ओके, सो आपको पता है कि बीकॉम की यहाँ पर जो सैलरी रेंज है वो 3000 या 3500. सम कंपनीज अलाउज ओनली 2500 dirham to start the career. Exactly. because Exactly. because the thing is अगर वो बीकॉम को 5000 दे रहा है और सीए को भी 5000 दे रहा है, तो वो फिर कोई डिफरेंशिएट नहीं रख सकता एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन में और उसके अंदर जो कि सिर्फ के डिग्री होल्डर है. तो इसमें वेरिएट, कुछ सीए इंटर ऐसे भी हैं जिन्होंने 7000 से करियर स्टार्ट किया, कुछ सीए क्वालिफाइड ऐसे भी हैं जिन्होंने 5000 से 5000 dirham से अपनी सैलरी स्टार्ट की है.
career. So it varies a lot. It depends on interview. Sometimes companies mention the salary, sometimes company does not mention the salaries. So if Okay. company is mentioning the salaries like 5,000 and you are CA qualified and you are applying for that job, so it means it means you are okay with that 5,000 dirham. And if salary is not mentioned there, okay, and you are having an interview and CA inter and you ask for the 7,000, after negotiating they are giving a 6K, so you are getting a 6K. So on the other hand, CA qualified getting a 5K and CA inter getting a 6K. So it depends on your interview skills, that how you manage the stress and how you manage the question and how you can take a more benefit in the interview, through the interview. So it depends on Okay. totally interview, और definitely कि आपकी degree और certification पे भी variate करता है. So in short the variation is 3,000 dirham to 7,000 dirham. 3,000 to For the 4,000 fresher dirhams in UAE, right? for BCom or MBA. Mm-hmm. Yes. And for the CA and ICMA and CPA, 5,000 to 7,000, just like this, you can vary it. Okay, so we have one question here also, and he is Masroor Anwar Khan, and he is also asking the same question. What is the salary of CA qualified in UAE? So I think you have Minimum answered, yeah, minimum 5,000 dirhams, right? Minimum 5,000. At least you have to go with the minimum 5,000, but you can get a 7,000 as well. I'm telling you again, it's depend on your interview skills. Okay. And if you are applying for a job, I'm telling you again for this question. If you are applying for a job and it is mentioned there that they are giving a 5,000 dirham, then you cannot ask for more, and it means you are happy with this salary, that is why you are applying for this job. So if there is not mentioned a salary, then you ask for the 7,000, because you can get a 7,000. Your range is more than 5,000, but minimum 5,000 should be used. You can start your career here easily. Okay, so we have some questions over here. What is he saying? I am from India. Thank you so much for joining the session. Um, okay, you are from Kashmir. Okay. Mr. Liaquat is asking, excellent session. Thank you so much, sir. Can you explain the concept of VAT, value added tax, and its implications for businesses in the UAE? Um, Let me tell you what is VAT. VAT is value added tax. It is already mentioned there in his question. So the thing is, for example, I belong to Pakistan, and most of the Indians are also here. So in our country, like in Pakistan, India, we have a lot of taxes. There is SRB, there is income tax, there is corporate tax. So वहाँ पे बहुत सारे taxes होते हैं. But here in UAE, they first invent a tax in 1st January 2018. Yeah, 2018, 1st January 2018, which is called VAT. VAT percentage of VAT is 5%. It means if I am manufacturing anything, for example, अगर मैं कोई ग्लास बना रहा हूँ, for example ये ग्लास अगर मैं बना रहा हूँ, इस ग्लास के लिए मुझे कोई चीज़ रिक्वायर्ड है, कोई भी मुझे रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, अगर मैं वो रॉ मटेरियल खरीदता हूँ 10 dirham का, तो जब मैं उससे वो परचेज करूंगा, तो परचेज करते हुए वो मुझसे 5% एक्स्ट्रा चार्ज करेगा. तो उसमें एक वैल्यू एड ऑन हो जाएगी. जब भी एक गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, तब तब उस गुड्स के अंदर 5% ऐड होगा. मैं वो रॉ मटेरियल खरीदूंगा 10 dirham का था, उसमें 5% ऐड होके फर्ज करें फॉर एग्जाम्पल 11 dirham वो बन गया, वो मैंने उससे 11 dirham में ले लिया. मेरी बुक्स के अंदर वो मेरा इनपुट है, उनकी गुड्स के अंदर वो उनका आउटपुट है. मैं थोड़ा वैट को डिफाइन कर दूं. वैट जो होते हैं वो दो तरह की कंडीशंस होती हैं, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है. इनपुट अप्लाई होता है जो कि मेरा रिसीवेबल होता है गवर्नमेंट के लिए. कोई भी चीज जब मैं परचेज करूंगा, वेन एवर आई एम गोइंग टू परचेज एनीथिंग एल्स, आई विल पे 5% वैट, विच इज कॉल्ड इनपुट. इनपुट टैक्स. इनपुट मीन्स in the end of the quarter, when I'm going to file the tax, I will claim the government, claim to government to give me back that amount. So what they will do, they will adjust the input tax with the output tax. For example, I'm purchasing 10 dirham amount goods, okay, and I'm selling 15 dirham amount, okay. I'm selling 15 dirham and I'm purchasing for 10 dirham. So
5% apply on 10 dirham, which I have to claim to the government, and 15% like on 15 AED, 15 AED के ऊपर जो कि मैं टैक्स बेच रहा हूँ, विदहेल्ड कर रहा हूँ, वो मुझे पे करना है। तो मुझे गवर्नमेंट से लेना 1 धर्म है और मुझे गवर्नमेंट को पे 2 धर्म करना है। तो उस इनका जो Okay. डिफरेंशिएट अमाउंट होता है वो 2 - 1 होके मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। 2 - 1 1। इट मीन्स मेरा इनपुट 1 धर्म था, आउटपुट मेरा 2 धर्म था। इनका डिफरेंशिएट मैंने गवर्नमेंट को पे कर देना। दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दैट, इनपुट एंड आउटपुट, दैट्स इट। Okay. So moving back to the questions, we'll cover the comments later on. Okay. So yes. So I think you have pretty much covered about this taxation system, right? Right, but it is not cover the whole. We just Okay. talk about the VAT, but here is now we are going to face corporate tax as well. Okay. सो एक वैट टैक्स होता है, एक एक्साइज टैक्स भी होता है जो कि हर महीने फाइल करना पड़ता है यहाँ पे, और एक कॉर्पोरेट टैक्स होता है जो कि इस वक्त हॉट टॉपिक है यूएई के अंदर, क्योंकि इस वक्त दो कंसल्टेंसी फर्म लाइक हु गिव्स टैक्स कंसल्टेशन टैक्स कंसल्टेंट टैक्स कंसल्टेशन, वो Yeah. कंपनीज जो टैक्स कंसल्टेशन दे रही हैं वो भी वरीड हैं रिगार्डिंग द कॉर्पोरेट टैक्स, कि कॉर्पोरेट टैक्स में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। सो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल रिगार्डिंग द कॉर्पोरेट टैक्स, लाइक कौन सी अमाउंट होगी, कौन सी अर्निंग होगी जिसके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स अप्लाई होगा। सो इट इज डिफाइंड दैट वो कंपनीज जो कि अर्न कर रही हैं एनुअली 3,75,000 dirhams, अंडर 3,75,000, सो उनका 0% कॉर्पोरेट टैक्स है। बट दोज कंपनी हु आर अर्निंग लाइक 375 dirhams से ज्यादा जो कि कंपनी अर्न कर रही है, उनको 9% कॉर्पोरेट टैक्स देना है। Okay. अच्छा, अब यहाँ पे लोगों का सवाल ये होता है कि यार कॉर्पोरेट टैक्स लग गया, अब कंपनी तो अपने रेट्स भी बढ़ा सकती है, इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है, और कंपनी हो सकता है यूएई की जॉब मार्केट फ्लक्चुएट भी करें, क्योंकि पहले यहाँ पर टैक्स नहीं थे, अब यहाँ पे टैक्स भी लग रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान में भी Exactly. लगता है, इंडिया में भी लगता है। तो स्टिल मैं ये बोलूंगा, स्टिल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड 9% इज वेरी लेस अमाउंट, इज वेरी लेस अमाउंट। 20% 30% मिनिमम टैक्सेस लग रहे हैं कंट्रीज के अंदर, सो इट्स स्टिल इट्स अ मिनिमम अमाउंट। और मैं एक चीज थोड़ा बता बता दूं, यहाँ पे क्लियर कर दूं, कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब ये है कि वो कंपनी जो कि अर्न कर रही है अपना प्रॉफिट ईयरली बेसिस पे, उसके ऊपर 9% टैक्स Okay. लगेगा, उसके ऊपर भी टैक्स है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। सिंपल वैट है एंड कॉर्पोरेट टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी की इनकम पे लगेगा, वैट आप सिंपली Okay. आपकी बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर लगेगा, Okay. 5%। So moving towards the next question, here it is. What are the visa and work permit requirements for finance professional moving to the UAE? Mostly 90% people are coming here in a visit visa, 90%, because they don't know how to search I a must job say and how 90. to do. I must Okay, say but there is a 95%, 10%, because mostly are on visit 90 to visa. Like 9, it varies, but those who are work, yeah, you so most probably sometimes people come from like let me tell you about KPMG. Okay, one of my cousin were working in KPMG with Pakistan, so he got some internal movement from KPMG Pakistan to KPMG UAE. सो उनको ये फायदा हो गया तो, क्योंकि एक मल्टीनेशनल फर्म के साथ थे, तो केपीएमजी में उनको इंटरनल मूविंग मिल गई, तो वहीं आ गए। जस्ट लाइक सेम डेलॉयट तो अब शायद पाकिस्तान में नहीं है, बट ये है कि ईवाई है और पीडब्ल्यूसी है, तो इंटरनल मूवमेंट मिल जाती है। मार्क्स है, कंटेनर कंपनी है, तो पीएनजी है। ये कुछ 4 to 5% आप कह सकती हैं, 5 to 10% जिनको पाकिस्तान से वीजा मिल जाता है, क्योंकि कंपनी उनको इंटरनल मूवमेंट दे देती है। बट 90% इज वेरी बिग अमाउंट। सो हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट के ज्यादातर, इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि लोगों को विजिट वीजे पर यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए आना ही पड़ता है, because we will cover the 90%, we will not cover the 10%, and we will not talk about the 10%. Okay, we are talking about the majority. So the thing is that, so visit visa most probably people come. so, what do you think? What is the growth of finance and accounting professions in UAE in the coming years?
What I have experienced since last year, okay, so opportunities तो है काफी, ठीक है. Yeah, It exactly. depends. It depends how you start your career. Growth means what? Growth means ये कि आपको सैलरीज ग्रो कर रही है नहीं कर रही है, आपका करियर ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा, आपकी लर्निंग ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही है. फॉर एग्जाम्पल वो लोग जो कि आज से 1 साल पहले काम कर रहे थे, तो वो उनकी उनकी जो लिमिटेशंस थी वो वैट तक थी, लेकिन अब इस साल उनको एक कॉर्पोरेट टैक्स भी मिला है जो कि इनकी नॉलेज में इन्हांस करेगा. टैक्सेशन के हवाले से एक नई चीज आई है ना, तो लर्निंग हुई है. और दूसरी चीज ये कि इफ यू आर वेल एजुकेटेड, लाइक इफ यू हैव अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ होता है. यहाँ पे आपको सीमा भी मिलेगा, यहाँ पे आपको सीएमए भी मिलेगा, यहाँ पे आपको सीपीए, सीए, एमबीए, बीकॉम भी मिलता है. बीकॉम वाला भी अप्लाई कर रहा होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली जॉब के लिए, वो अप्लाई करता है किसी तरह से मैं इंटरव्यू में प्रिपेयर हो जाऊँ. तो कंपटीशन इज वेरी हाई. कंपटीशन इज वेरी हाई. और ग्रोथ तो है डेफिनेटली, क्योंकि यूएई जब जब ग्रोथ करेगा, इकोनॉमी में जैसे इंक्रीज आएगा, डेफिनेटली एक अकाउंट्स एंड फाइनेंस प्रोफेशनल के बगैर हम कोई भी चीज आगे लेकर नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल एनालिसिस चाहिए होते हैं, प्रॉपर एनालिसिस चाहिए होते हैं किसी भी बिजनेस के आउटकम के लिए. तो रोल्स तो हमेशा रहेंगे, ये कभी भी कम नहीं होंगे, बल्कि उल्टा बढ़ेंगे डे बाय डे. Okay. एक चीज That's मैं ऐड करना चाहूँ इसमें, एक चीज मैं ऐड करना चाहूँ. वजह ये है ग्रोथ रेट बढ़ने के. फॉर एग्जाम्पल कि कुछ जो जहाँ मेरी सिटिंग है, वेयर आई एम सिटिंग एंड वर्किंग, वहाँ पे कुछ ऐसे भी पाकिस्तानी हैं और इंडियन हैं जो कि यूके नेशनल हैं. But when I okay. asked them, so why you are working here in Dubai? So they told me just because of high taxes we paid there. So वो जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए यूके एक बहुत बड़ा जाइंट है कि यार हम यूके जाएं, यूके जाएं, यूके जाएं. लेकिन यूके से भी लोग आके यहाँ काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ अगर वो 100 पाउंड कमा रहे हैं तो उनको 60 मिल रहे हैं. यहाँ अगर वो 100 धर्म कमा रहे हैं तो उनको 100 के 100 मिल रहे हैं. और यहाँ Yeah. से वो यूपी में मनी सेंड कर रहे हैं, और वहां पे वो अपनी प्रॉपर्टी वगैरह जो भी उन्होंने करना है, फैमिलीज उनकी वहां है, तो इजिली वो अपना लाइक फैमिली रन कर रहे हैं, अपने अपने आप को ग्रोथ दे रहे हैं. तो उसका मेन वजह जो है ना, यहाँ पे लेस टैक्सेस है, और सबसे बड़ी बात इनकम टैक्स यहाँ पे है ही नहीं. तो इसलिए यहाँ पे ग्रोथ रेट बहुत हाई है इन फ्यूचर ऑल्सो. दैट्स द मेन Okay. रीजन. So, moving towards the next question, we have like people usually ask us like how we can apply for the job. So, do you know any resources or any websites or organizations that could help the finance professional in their job search? डेफिनेटली आई वुड लव टू स्टार्ट विद द लिंक्डइन. सो पहले तो मैं यही बोलूंगा कि भाई, आप लिंक्डइन पे एक्टिव रहें, ठीक है. आप लिंक्डइन पे एक्टिव रहें, और वो प्रोफेशनल्स जो यहाँ पे काफ़ी अरसे से हैं उनको कांटेक्ट करें, और उनके पोस्ट को देखें. वो जॉब्स शेयर करते हैं जिसके अंदर क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है, एक्सपीरियंस रिक्वायर होता है, तो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर. बट इफ आई टॉक अबाउट एनी वेबसाइट एंड एप्लीकेशन, सो वी हैव हियर लाइक इंडीड हो Mm-hmm. गई, नौकरी गल्फ हो गई, और आपका गल्फ टैलेंट हो गया, और बैट.com हो गया. इस तरह से काफ़ी जगहों पे आप आईडीज बना सकती हैं. अगेन आई आई वुड से अल्फुतैम ग्रुप, वहाँ पर भी जाके आप आईडी बना सकते हैं, अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं. बहुत बड़ा ग्रुप है. आप वहाँ जाएँ, अपनी आईडी बनाएं, तो आपको नोटिफिकेशन आते हैं जब भी वो कोई जॉब अनाउंस करेंगे. वहाँ आपको आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे कि यार ये जॉब है, तो आपसे रेलिवेंट हो, आप अप्लाई कर सकते हो. सेम एज फॉर द एमिरेट्स ग्रुप भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है. तो वहां पर भी जाके आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं. अगर मैं आपको इन सिंपली बोलूं, अगर आप जस्ट सिर्फ एक लिंक्डइन के ऊपर, इंडीड के ऊपर ही आप फोकस कर लें, एंड अदर वेबसाइट, 2 और 3 वेबसाइट, Indeed, people are so much देन active on. you can easily can get a job here. But you have to be like आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए, और राइट डायरेक्शन होनी चाहिए. आप बीकॉम हो और एक जगह पे लिखा हुआ है कि सीए क्वालिफाइड चाहिए, आप अप्लाई कर दोगे तो डेफिनेटली आपको रिप्लाई नहीं आएगा. Exactly, relevant, irrelevant इतना अप्लाई कर रहे होते हैं लोग. लाइक आई एम फ्रॉम द एचआर बैकग्राउंड एंड आई एम गेटिंग सो मेनी रेज्यूमेस डेली बेसिस. सो आपने अगर फ्रंट डेस्क की डाली है या अगर आपने किसी भी पोजीशंस की पोस्ट डाली है, उस पर इररेलेवेंट बहुत आएंगे. प्लस दे आर नॉट इवन फोकसिंग ऑन द पोस्ट कि पोस्ट है कहाँ की.
Like if I am saying that I have an urgent requirement in Dubai, so Pakistan से लोग apply कर रहे हैं, India से लोग apply कर रहे हैं कि मैम please job करवा दें. So it is not going to get happen. अगर आप अपने home country में हैं, so it is not going to get happen कि आपको यहाँ पे job मिले. First you have to be here and then you have to be active on LinkedIn. और जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं यहाँ पे जैसे माइकल पेज है एंड पिंक कैमल है, ब्लैक एंड ग्रे HR है, ये बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं दैट आर हेल्पिंग पीपल टू गेट द जॉब. सो एक तो अपनी जैसे आपसे मैं अग्री करती हूँ, अपनी रेलिवेंट जॉब के लिए अप्लाई करें एंड देन जहाँ पे जितना एक्सपीरियंस आपके पास है तभी अप्लाई करें, वरना लोग आप यही कहते रहेंगे कि यू आर नॉट गेटिंग अ जॉब और आपका वीज़ा खत्म हो रहा है, तो वो इसी बेसिस पे होगा. एग्जैक्टली यू आर राइट. एक्चुअली दे आर क्रिएटिंग अ फेक हॉप. एक फेक हॉप भी होती है बंदे की कि यार मैंने अप्लाई किया हुआ है जॉब पे, तो हमें ये चाहिए कि हम फिल्टर करें. मैं एक एग्जैक्ट छोटी सी एक और एप्लीकेशन का नाम बताऊं, स्किल बी का नाम. या डू यू स्किल हर्ड? स्किल बी में अगर आप जाते हैं तो वहां पे जो जॉब्स आ रही होती है 3000 दरम, 3500 दरम्स की आ रही होती है. तो मैं मोस्टली प्रिफर करूंगा बीकॉम वालों के लिए, स्पेशली गो देयर, अप्लाई देयर, सो यू कैन फाइंड अ जॉब. एक मेरे सामने की बात है, एक द मैन हु बिलोंग्स टू पाकिस्तान, स्पेशली बिलोंग टू फैसलाबाद, ही इज जस्ट अ बीकॉम. he does not have anything else, but he is working in a taxation consultancy firm. Oh, और उनको wow. वो काम कर That रहे हैं depends बीकॉम की on बेसिस that. पे. Yeah, वो that बीकॉम. depends on that totally. लेकिन So, फिर ये सैलरीज में भी वेरिएशंस आती हैं कंपनी के, उसके स्केल के ऊपर भी फर्क होता है कि कंपनी कौन सी है फिर. क्योंकि दे नो वी आर फ्रॉम इंडियंस एंड पाकिस्तानी, वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. वी डोंट हैव एक्सपीरियंस इन यूएई, बट वी हैव अ experience in our parent country. So the thing is, they know that we can do it, but they just negotiate just because of degree and just because of certification. They negotiate with the salaries. right, That's it. right. So, we have few more comments. Okay, so one more comment we have. Can you share tips for acing interviews with finance employers in the UAE, including common questions and best practices? And the common question is, definitely whenever you are going to apply for the job, you can see there is always mention in 90% plus jobs 2 years of experience required for UAE. But still you are applying there and still they are calling for the interview. इसका Right, मतलब ये इसका मतलब ये इट मींस दैट कि वो जानते हैं दैट यू डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑफ यूएई, बट स्टिल दे आर कॉलिंग यू फॉर द इंटरव्यू. So right, they would ask you something like, definitely you don't have experience, but definitely they will ask you something. So वो आपसे क्या पूछ सकते हैं? यहाँ पे इस वक्त जो हॉट टॉपिक है कॉर्पोरेट टैक्स है, और दूसरा वो आपसे वैट से रिलेटेड पूछ सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ये ऑल ओवर वर्ल्ड सेम है. डिफरेंशिएट करता है तो लॉ डिफरेंशिएट करता है, डिफरेंशिएट करता है तो टैक्स डिफरेंशिएट करता है. तो वो आपको जो क्वेश्चन पूछेंगे वो यही पूछेंगे कि आप यहाँ के टैक्स के हवाले से जानते हैं कि नहीं जानते हैं. So this is the only way that you can overcome your stress while during the interview. That if you talk about the VAT and corporate tax, definitely they will not, maybe they will not ask you regarding corporate tax and VAT, but you have to tell something then that you know regarding the VAT and corporate tax, and you are learning, and you have your tax experience in Pakistan as well, so you can overcome your stress during the interview. So इस तरह से आप कर सकते हो, जो कि मैं देख रहा हूँ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग वालों के लिए ये हॉट टॉपिक है टैक्स. okay. So, moving towards our another question. Okay, so how can finance professionals enhance their career prospects and progression in the UAE? Um, Definitely, first, all the professional looking for a job try to get a job here. And once they get a job, for example, if someone get a job from 5,000 and someone get a job of 7,000, it means they are starting their career with the amount of 5,000, 7,000. So Right, enhance means what? Enhance means, are you looking for the career growth along with your salaries and all these things? So definitely, if you are only a BCom and you are starting your career from 3,000 dirham,
then you would have some certification, you would have some certification at least related to taxation, so you can enhance at least for the specific एक स्पेसिफिक आप फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर आप जा सकते हो, जैसे कि वैट है। इसी तरह से कोई अगर सीए है, अगर उसका बीकॉम नहीं हुआ हुआ है, वो कोशिश करे कि बीकॉम करे, क्योंकि सर्टिफिकेशन प्लस डिग्री ऑलवेज मैटर्स अ लॉट। तो इसी Right. तरह से जैसे जैसे आप आगे ग्रो करोगे, तो माइनर माइनर सी चीजें भी बड़ा लिंक कर रही होती हैं। एक पोजीशन के लिए आपने भी इंटरव्यू दिया, दो सीए दोनों ने इंटरव्यू दिया, और दोनों ने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बाद बस डिसाइड करना है, क्योंकि बोथ आर सीए क्वालिफाइड एंड हैविंग अ 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एंड दोनों का अच्छा इंटरव्यू होता है। तो फिर वो आते सर्टिफिकेशन पे आ जाते हैं समटाइम, तो वो देखते हैं कि यार इनके पास एससीपी का है सर्टिफिकेट, या उनके पास एसक्यूएल है कि नहीं है, या इनके पास इनमें से बीकॉम कौन है या मास्टर्स कौन है। तो वो फिर डिवाइड करते हैं इस तरह से सर्टिफिकेशन वाइज, क्योंकि हर बंदा यही चाहता है कम पैसों में अच्छा बंदा उठाए, जो कि लायबिलिटी नहीं एसिड बने कंपनी के लिए। और Exactly. ये होता है, तो आगे जाके डेफिनेटली कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, तो आपको बहुत देख के ग्रो करना पड़ता है। एंड इट वेरिएट्स लाइक टाइम टू टाइम। आज आप क्या हो, आप किस चीज़ के लिए लुक आफ्टर कर रहे हो, कल आप क्या होगे, आप किस चीज़ के लिए। तो करियर इज ऑलवेज देयर, बट आपको सही डायरेक्शन में ले जाना, ये आपकी काबिलियत और आपके ऊपर इन्हसार होगा कि आप किस तरह से इसको लेके जा रहे हो आगे। क्योंकि ये मैं बता सकता हूँ, ना कोई बता सकता है। बता भी देंगे तो अप्लाई आपने करना है। तो Exactly. जो मैं बता सकता था मैंने अपने एंड से बता दिया। So that's my question to you. Like, what do you think? Like, how much you have grown since last 1 year when you have come to UAE? और जो आपका like पाकिस्तान में जो experience था 6 to 7 years का या 5 years का, और अब जो आपका UAE का 1.5 years का experience है, so what's the difference you are seeing over here and what's the difference you were seeing in Pakistan? Uh, the most important difference is multicultural difference. In Pakistan, we are only same language like English or Urdu, these sort of things. But here, like my boss is from Jordan, and he is well qualified and very genius guy. And I am direct to my boss. Like he is also a CPA qualified, so he can identify easily my mistakes because he is a boss and he is CPA qualified. I am Right. working in his company. Right. And if I talk about myself, when I hired by a company as a general accountant, initially it was only related to accounts and finance. But with the passage of time, right now I'm working as a head of department also, like because I have to look after all these things related to accounts, taxation, finance, and to handle the employees as well. As you know, most of the accountant handling different tasks also, like related to operations also. I look Exactly. after all the shipment which is coming from the Spain. I do the Okay. operational things, and to manage the uh, वो कहते हैं ना कि जो भी एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स होती हैं, वॉट एवर द प्रॉब्लम्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड वॉट एवर दे आर आस्किंग फॉर, दे ऑलवेज रिक्वेस्ट मी. I am Okay. acting like a HR person also, as a operational officer also, as a management officer also. Yeah, management Okay. consultant also. So I have to look after all these things. But my core competency is accounts and finance. That's it. Okay, that's great. So, okay, so how can finance professionals network and build connections within the UAE financial industry? It is very easy. Like if you go to the LinkedIn, you can find out a lot of professionals there. Let me give Yeah. you some example. Let me give you some example. If you search Shafiq CPA, he is partner and owner in Ahmad Al Bagari Chartered Accountant firm. He is Okay. CPA qualified and he is also a tax agent. You can see his profile. So you just Okay. have to find out these type of professionals, and you have to connect with them, and you have to ask to them. Definitely, they will respond to you whenever they have a time. And same Right. as for the ICMA, if I talk about the CMA, there's the ACMA guy, you can say Kamar Hussain Saab. He is also working really hard for the CMA students. So you can connect with them. And there's a lot of professional also there, just like a CA. You can say Nafar Hussain. He is also a partner in ANK Global Chartered Accountant.
So you just need to do the right thing. You need to do the filters and find out the personals. And I don't know if अगर आपको पता है कि लिंक्डइन बंद बंद का आपको एक प्रीमियम भी देता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप Exactly. वो भी अगर आप वो भी यूज करते हैं सही तरीके से, तो आप इजीली फाइनेंस प्रोफेशनल के साथ अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। और कोशिश ये करें, अगर आप जॉब सर्च के लिए आ रहे हैं, एटलीस्ट 2 महीने 3 महीने पहले एक्टिव हो जाए। वीकली Right. बेसिस पे, इन वीकली बेसिस पे यू हैव अ चांस टू इंक्रीज योर 100 कनेक्शन इन Mm-hmm. लिंक्डइन। सो आप कोई भी 100 कनेक्शन इंक्रीज कर सकते हो वीकली वाइज अपने लिंक्डइन के ऊपर। अगर आप 2 महीने पहले भी स्टार्ट करते हो, अगर आप वीकली 100 कनेक्शन इंक्रीज करते हो, एंड तो आप 400 × 4 अगर आप कर लो, 1600 कनेक्शन आप 1 मंथ में इजिली, सॉरी 4 मंथ में आप आराम से 1600 कनेक्शन अपने बिल्ड कर सकते हो पर मंथ, 400 कनेक्शन। तो सबसे पहले आपने अपने कनेक्शंस के ऊपर काम करना है जहां आप जा रहे हो। लाइक कि आप यूएई आ रहे हो, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई, filter the companies, then you have to go to the employees domain, then you can find out their HR personal there, you have to contact them, then you have to contact your professional accountants, professional qualified personals here related to accounts and finance. You need to identify, you have to search to them on basis of like LinkedIn. So that's how you can increase your network and build connection within the UAE and outside the UAE as well in the financial industry. Okay, so we have one more question from Aisha Khalid. Walaikum Assalam. Thank you for the session, Nawaz. Thank you, Aisha, for joining the session. Is there any professional certification required for treasury professionals or people as well? What I have seen here, if you talk about the treasury professional, they guys who have experience. For example, if you have experience in Pakistan only in treasury, so Mm-hmm. definitely you are looking for here a treasury. But the thing is there not any specific qualification? You can say qualification is same, like you should have some certification, you should have at least a degree, so you can compete with these type of jobs in the interview. You just need to handle the interview pressure, that's it. Because for one job there is a multicultural people come and give the interview, like कि इंडिया से भी लोग आते हैं, लोग बाहर से भी आ रहे होते हैं, यूके से भी आ रहे होते हैं एक ही जॉब के लिए। फिर आपके गल्फ कंट्रीज से भी बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, अरब कंट्रीज के लोग होते हैं बहुत सारे जो कि इंटरव्यू दे रहे होते हैं। तो उनके लिए आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है ऑन बेसिस ऑफ स्किल्स। तो क्वालिफाइड तो मोस्टली यहाँ पे लोग होते हैं, बट दे डोंट गेट अ जॉब जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इंटरव्यू। सो यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। ओके सो मसरूर हमसे वापस से पूछ रहे हैं remember we told him about the salary for CA qualified, so he's saying that are you telling for a fresher or experienced CA? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर सीए क्वालिफाइड, डेफिनेटली कि आपका तो आर्टिकलशिप कंप्लीट हो चुकी होती है, आप ड्यूरिंग सीए ही आप 4 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, एंड इफ यू आर क्वालिफाइड। बट द थिंग इज, अगर आप जॉब सर्च करने विजिट वीजे पे यहाँ आते हो, इफ यू आर कमिंग थ्रू विजिट वीजा, सो जो सैलरीज मैंने आपको बताई है 5K to 7K, ये आपका रेंज होती है। 5 to 7, 5 से नीचे भी लोग आपको ऑफर करेंगे। वो ये नहीं देखेंगे आप सीए क्वालिफाइड हो क्या हो, आपको 5 के नीचे भी ऑफर करें। यू जस्ट नीड टू शो देम दैट नो, यू आर नॉट विलिंग टू वर्क लेस देन 5। एटलीस्ट इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द 5K between 7K, so I am telling you the fresher salary because they don't consider the experience of Pakistan. अगर आप Right. 5 साल, अगर आप सीए क्वालिफाइड हो जाते हो और 5 साल लगा के भी आते हो ना, और यहाँ के इंटरव्यू देते हो, आपको 5-6 हज़ार धर्म से ऊपर 90% आई एम श्योर दैट नो वन विल ऑफर यू, क्योंकि वो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस काउंट नहीं करते हैं। हालांकि ना आपको सब पाकिस्तान का आता है। एक्सपीरियंस होता है ना इंडिया का एक्सपीरियंस, आपके अपने होम कंट्री का एक्सपीरियंस, दे आर नॉट गोइंग टू काउंट इट। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो द थिंग इज, मुझे जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि भाई मैं सीए इंटर हूँ, मेरा फाइनल नहीं निकल रहा, सो व्हाट शुड आई डू। सो आई आस्क देम, अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो सीए इंटर इज आल्सो इनफ to compete here in UAE. So आप आ सकते हो, rather than to spend 3 years in your home country, then you will come and you will get the same pay of 5K or 6K, then you will have to start your career. So try to come right now, start your career from 5 to 6K on basis of CA inter.
and then after 3 years you will be at more than 10K and just like of this. So that's the main thing. आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप क्वालिफाइड होने के बाद आना चाह रहे हो या सी एंटर के बाद आना चाह रहे हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। बट ये है कि अगर आपने बाहर आना है, आई वुड सजेस्ट यू, अगर आप सी ए क्वालिफाइड आ जाते हो तो आप कल आ जाओ। तो आप जितना टाइम अपने होम कंट्री में स्पेंड करोगे, लर्निंग तो आपको हो जाती है आर्टिकलशिप के अंदर ही। बट द थिंग इज, अगर आपने करियर अपना गल्फ कंट्रीज में स्टार्ट करना है तो आप जितना जल्दी आप आ सकते हो, आप सी एंटर के बाद भी आ सकते हो, आप सी ए क्वालिफाइड के बाद भी आ सकते हो। बट जो रेंज ऑफ सैलरीज है वो मैंने आपको बता दिया, 5 to 7K इजिली आपको मिल जाती है। Okay, so we have our last question. Are there any specific skills or knowledge area that are particularly valued by the employers in the UAE? I think ये general question है, तो आप उसको generally बता दें कि क्या क्या skills या क्या क्या उनके अंदर ऐसी expertise होनी चाहिए to pass their interviews. द थिंग इज कि जब कोई आपको कॉल के लिए, इंटरव्यू के लिए कॉल करता है, डेफिनेटली वो आपकी क्वालिफिकेशन जानते हैं, दे नो योर क्वालिफिकेशन, दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग फॉर द इंटरव्यू। एंड वो आपका एक्सपीरियंस भी जानते हैं, होम कंट्री एक्सपीरियंस कितना भी है। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे वो जस्ट आपको जज कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू, लाइक कि Exactly. आपके मल्टी कल्चर स्किल्स हैं कि नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आपको इंग्लिश बोलने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन इनका जो एक्सेंट होगा डिफरेंट होगा। अरबियों का इंग्लिश बोलने का तरीका अलग है, श्रीलंकन का अलग है, इंडियंस का अलग है, पाकिस्तानी का अलग है, यूके का बिल्कुल अलग है। So बिल्कुल. you will find these sort of troubling. So they just observe you during the interview that will you be adjust with the multicultural environment or not. तो यही स्किल्स होती हैं। बाकी नॉर्मल स्किल्स जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, निगोशिएबल होना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, ये यही स्किल्स होती हैं और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर जस्ट जो कंसिडर होती है, जो मेन स्किल्स है जो यहाँ कंसिडर होती है, वो Communication. आपको मल्टी कल्चर हो आप या नहीं हो, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज और नॉट। And most important, आपके पास इतना confidence है या नहीं है? Like people are not confident enough over here during their interviews. They डेफिनेटली। get tense, और जो उनको even आता भी है वो बोल नहीं पाते हैं. So I have experienced a lot over here कि candidates बहुत ज़्यादा जो है वो confuse हो जाते हैं interview के time पे. So you must have the confidence, and secondly you must have the communication skills, जो बहुत मैटर करता है यहाँ पे। A सो lot. we have some more comments over here. Great session. Thank you so much, inspiring accountants. Uh, Mr. Liaquat is asking, could you share success stories or testimonials from finance professionals who have successfully transitioned to the UAE job market? Do you know any finance professionals? Like in terms, can you please elaborate more in this question to clarify? Like, Mm, do you know any finance you are talking, professional? Yeah. you are talking about the job seekers, finance professional who grow, who found Who out. came over here and then grew themselves and then become a good leader over here. Uh, yeah, definitely. Let me. I will not say the name. I will not call the name of that person. Maybe. So I know some personals who came here like in 2016, 2017, as a CA qualified. Then they started to work here as a Mhm. chief accountant. Then they went through all the seats related to accounts. Now they are running their whole own company here, own firm, own company. So the Oh, growth rate is always, yeah, for the finance professional, the यहाँ पे always आपके पास एक option है कि आप अपना consultancy business भी start कर सकते हो। You just need to aware with this culture, that's it. So बहुत सारे मैंने professionals को देखा है यहाँ पर, जो कि यहाँ पे बकायदा अपनी companies भी run कर रहे हैं। okay, इन that's इन इनके अंदर मैं एक कंपनी का नाम लेना चाहूंगा जो कि है एडेप्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे कि मैंने आपको आईसीबी का नाम बताया था, इन कंट्री वैल्यू उनकी एक अथॉरिटी है। तो आईसीबी जो कंपनीज हैं वो टोटल पूरे यूएई के अंदर लास्ट मंथ तक 26 थी। ओनली 26 कंपनीज आर ऑथोराइज्ड टू इशू द आईसीबी सर्टिफिकेट। उनके अंदर एक एडेप्ट चार्टर्ड अकाउंट भी है जो कि एक पाकिस्तानी है पार्टनर, उनके साथ जो रन कर रहे हैं। तो ये एक चीज मैं right. जानता था जो मैंने आपको बताई।
तो ग्रोथ तो ऑलवेज है। अगर आप जॉब करना चाहें पूरी जिंदगी यहाँ जॉब कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस माइंड है, आप यहाँ आए जॉब करें, मार्केट ऑब्जर्व करें, देन यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस एज वेल। तो Okay, यहाँ तो हम so जॉब की बात कर रहे थे, खाली यहाँ तो बिजनेस पे भी हम आ गए हैं। तो अच्छी बात है ना, लाइक अगर आप जॉब करने के उससे आए हो प्लानिंग से, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस इन नेक्स्ट 2 to 3 years, so दैट्स अ गुड। और मेरे ख्याल से ये मेजर ग्रोथ है। अगर आप इन कंपैरिजन अगर आप दूसरे कंट्रीज में देखो और आप यूएई में देखो, सो यू इन यूएई यू हैव द चांस टू ग्रो योरसेल्फ एज अ बिजनेसमैन आल्सो, सो या। ऑलवेज So she, ऑलवेज। please tell about ICMAP qualified and enter. I think it's an incomplete question. या अगर आप कुछ या कह ही सकते एक्चुअली इन्होंने ये नहीं बताया है कि ये पूछना क्या चाह रही हैं। अगर ये जॉब सर्च के हवाले से पूछना चाह रही हैं तो वो आईसीएमए फाइनलिस्ट जिनके एक दो पेपर रहते हैं, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कंप्लीट कर कर आए। ठीक है, ओके। क्योंकि जब कोई वैकेंसीज यहाँ पर आती हैं उसके अंदर अगर आप खुद देखेंगे उन वैकेंसीज को, तो लिखा हुआ होता है एसीसीए आईसीएमए क्वालिफाइड और सीए इंटर। इसका मतलब ये है कि दे आर प्रिफरिंग सीए इंटर टू इक्विवेलेंट टू एसीसीए क्वालिफाइड और आईसीएमए क्वालिफाइड। ये मैं नहीं कर रहा, ये मैंने अक्सर जॉब पोस्ट के अंदर देखा है। तो एटलीस्ट अगर आप आईसीएमए क्वालिफाइड होकर आते हैं तो ये आपका प्लस पॉइंट है। बट अगेन आईसीएमए फाइनलिस्ट भी एक वर्थ रखता है बहुत अच्छी। एंड अगेन इट डिपेंड्स ऑन इंटरव्यू, क्योंकि उस इंटरव्यू में सीए वाला भी आ रहा है, एसीसीए वाला भी आ रहा है। अगर वो आपको प्रीफर करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको कोशिश करेंगे कि थोड़ा लेस सैलरी में पे करें, लेस सैलरी में हायर करें। Okay, so she has continued her question. I have done BCom and CMA finalist. I'm coming UAE next month. Please share your tips. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से आई वुड से कि आप अपने लिंक्डइन कनेक्शन इंक्रीज करें विद इन द यूएई। और जिस तरह से मैंने कुछ नाम भी बताए थे, सीएमए के भी मैंने आपको कुछ नाम बताए हैं और फर्दर नाम भी हैं, क्योंकि सीएमए भी इटसेल्फ यहाँ पे काम कर रहा है अपने लोगों के लिए काफ़ी अच्छे लेवल पे। तो मैं उनका अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा ऑन लाइव सेशन। तो आप सीएमए से बिलोंग करती हैं, आप अपने सराउंडिंग में चेक करें वो कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो यहाँ काम कर रही हैं। बाकी आप पूछ सकती हैं, बाद में भी पूछ सकती हैं कि कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो सीएमए से रिलेटेड यहाँ काम करें, तो उससे हेल्प ही होगी। जैसे कि आपने कहा आप नेक्स्ट मंथ आ रही हैं, एक चीज़ तो ये कि आप अपना लिंक्डइन का प्रीमियम यूज़ करिएगा एक हफ्ता पहले, 2 हफ्ते पहले। क्योंकि आज आप किसी जॉब में अप्लाई करती हैं तो मोस्ट ऑफ द जॉब्स में शो मेंशन होता है कि 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद वो फाइनलाइज करेंगे एप्लीकेशन को। तो कोशिश करेंगे एक दो हफ्ता Exactly. पहले अप्लाई करना स्टार्ट करें, ज्यादा पहले भी अप्लाई करना स्टार्ट ना करें, क्योंकि आपकी वो अपॉर्चुनिटी वेस्ट भी हो सकती है। क्योंकि इफ दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू एंड यू विल नॉट प्रिपेयर, तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम दे विल नॉट कंसिडर यू। तो ये भी चीजें होती हैं। So, तो लिंक्डइन के कनेक्शंस अपने बढ़ाएं आप, और सीएमए फाइनलिस्ट भी इनफ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर कि ये सबके लिए है, अपनी सर्टिफिकेशन जरूर कंप्लीट करके आइएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं लेकिन सर्टिफिकेशंस अपनी कंप्लीट नहीं करते। सीए इंटर है जैसे और सीए क्वालिफाइड है, इन दोनों की भी सर्टिफिकेशन होती हैं, लाइक के अटेस्टेशन होती हैं, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन। एमबीए फाइनेंस की भी डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन होती है। सीएमए फाइनलिस्ट का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन सीएमए क्वालिफाइड की तो अटेस्टेशन होती है डॉक्यूमेंट। लेकिन बीकॉम है तो बीकॉम भी आपका अटेस्टेड होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होंगे तो ऑन बेसिस ऑफ योर डॉक्यूमेंट कंपनी विल गेट यू फॉर द will get for will get you a visa for you on basis of your document attestation. So it is must required for you. So जब भी आए अपनी डिग्री और सर्टिफिकेशन जरूर अटेस्ट करके लाइएगा। okay. There is one more question over here. What is the value for CMA USA? Do you have any idea? Yeah, so, like CMA USA, or if you say SEMA, and if you say CPA, because most of the people don't know about the C and CPA also, what is C and what is CPA, just like same as for the CMA USA and CMA ICMAP. So they are same. I would say again there is only a difference in the law and taxation. That's the only difference that you can overcome in a month also while you are working in any organization. अदर थिंग तो बाकी तो सब चीज़ें सेम होती हैं, बट डिफरेंशिएट करता है आपकी टैक्सेशन एंड लॉस को डिफरेंशिएट करता है।
Okay, so Sir Liaquat is saying big kudos to both of you on informative session. Your efforts are truly appreciated. Thank you so much, sir, for your Thank you. kind words. In the end, फैसल अगर आप कुछ अपने कोई एडवाइस है या कोई सजेशंस जो आप जॉब सीकर्स को देना चाहें. I would say I would give you two or three tips. First is do the basics thing. What is basics? जब भी आप यूएई आ रहे हैं 2-3 महीने से अपने लिंक्डइन पे कनेक्शन इंक्रीज करें और अपना कोशिश करें जब यहाँ पर आए तो अपना प्रीमियम 1 मंथ का फ्री यूज़ करें. देन यहाँ पे जिस भी सर्टिफिकेट से आप बिलोंग करते हैं जिस भी फील्ड से उन लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करें थ्रू लिंक्डइन. उनसे कनेक्ट हो आने से पहले. देखें जो करना है आपने आने से पहले करना है. अगर आप एग्जैक्टली. आने से पहले सब चीजें कर लेंगे तो जब आप यहाँ पे आएंगे ना तो आप मतलब कि आप उन लोगों से बहुत आगे होंगे जो यहाँ ऑलरेडी आपसे 1 महीना पहले आए हुए होंगे. क्योंकि आपको अगर आप 2 महीने के वीजे पे भी यहाँ आते हैं इफ यू आर कमिंग 2 मंथ वीजा फॉर 2 मंथ वीजा इन यूएई. So you have only 2 months. So what mostly people do in 1 month they are wasting their time to increasing the connection, to calling the connection and moving towards the references and these sort of things, making IDs on Indeed and even in LinkedIn also. Some people I have seen that they are making a LinkedIn ID after reaching here to find out the job. So do Exactly. all these things in your home country before coming here and must attach your all documents. That's it from my side. Okay, so we have the last comment. Looking forward to the next informative session to support the job seekers and professionals community. Yeah, because NAVAFIZ aim is to help the people and to help the job seekers. So yeah, we are again going to come live on the YouTube channel with some new topics and with some new fields. Okay, so there is one more comment. Register yourself with all job posting website. Register with recruiters. Attend career related sessions. Yes, exactly. Inspiring accountants. ये बहुत मेन होता है कि आप अपने आप को एक तो रिक्रूटर्स के साथ एंगेज करें प्लस आप यहाँ पे जितने भी सेशंस हैं करियर से रिलेटेड करियर सेमिनार्स हैं करियर ड्राइव्स हैं जो भी जितना ज़्यादा आप अपनी नेटवर्किंग बिल्ड कर सकते हैं उतना यहाँ पे करें आके तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ जॉब. It's not difficult to get a job, but yeah, you have to be patient and you have to be consistent. ये नहीं कि अगर आपको नहीं मिल रही जॉब तो आप गिव अप कर दो, आप अपनी होप्स खत्म कर दो. ऐसा नहीं है. जितने भी लोग अभी यहाँ पे आए हैं in my surrounding, I have seen them कि उन सबको job मिल गई है अलहमदुलिल्लाह. So yes, that's the main thing. And thank you so much, Faisal, for joining this session and for sharing the valuable information and your tips. It really means a lot to have you here and to discuss about this on Nawafis platform. Thank you so much. Thanks to Nawafil Consultancy again. Thanks, Manu. Thank you so much, everyone. Till then, bye.